So in last lecture we talked about the angular momentum and we defined angular momentum L as R cross P, and we also defined torque tau, which will be equal to R cross F. Now we have also discussed that L is analogous quantity to P and also tau is a analogous quantity to F. जिसका essentially मतलब ये हो रहा है कि जो इफेक्ट P का होगा, जो इफेक्ट लीनियर मोमेंटम का होगा इन लीनियर मोशन, वही इफेक्ट एंगुलर मोमेंटम का होगा इन रोटेशनल मोशन, एंड जो फिजिकल सिग्निफिकेंस फोर्स का होता है जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, वही फिजिकल सिग्निफिकेंस टाउ का होता है जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं. तो इसके आगे का एक नेचुरल सा सवाल ये आना चाहिए कि जो अगर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम के लिए एप्लीकेबल है, तो क्या वो एंगुलर मोमेंटम के लिए भी एप्लीकेबल होगा? ये एक नेचुरल सा सवाल होना चाहिए, एंड हम उसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स कि सच में एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्सर्व. सो व्हाट डज लॉ टेल्स अस? दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है कि अनलेस एंड अनटिल सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रहे, सो टोटल मोमेंटम इज कॉन्सर्व. सो सिमिलरली अगर हम ये कर रहे हैं कि फोर्स इज जीरो फॉर कंजर्वेशन, so now here tau should be 0 for conservation. Okay, so let's just start with L, angular momentum, which is equal to R cross P. Now we will differentiate L with respect to T. So we will have dl by dt, which will be equal to d by dt of R cross P. Now we can differentiate it by the multiplication law. So we will have, हम पहले P को constant रखेंगे, then we will have dr by dt and plus by keeping R constant dp by dt. हम P को हम रिजोल्व करेंगे जस्ट लाइक दैट, एंड R dr by dt is essentially velocity plus R cross dp by dt. नाउ यहां पे हम दो चीजों को हम रिवाइज करेंगे. वन इज फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड की, जहां पे हमने कहा था Newton's second law of motion. Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum is directly proportional to F. So we have F is directly proportional to dp by dt, or F is equal to dp by dt. Here proportionality constant is 1. So this is Newton's second law. So here we can put R cross F, and also vector product of cross product of two vectors is 0. So therefore m multiplied by 0. So हमें बेसिकली मिलेगा dl by dt which is equal to R cross F. Now which is equal to tau. जैसे हमने कहा था कि फॉर द कंजर्वेशन टाउ शुड बी इक्वल टू 0. सो अगर हमारा लीनियर एंगुलर मोमेंटम अगर हमारा कंजर्व हो रहा है तो टाउ मस्ट बी 0. सो देयरफॉर dl upon dt must be equal to 0. And if derivative is 0, then quantity must be
constant. Therefore, if dl by dt is 0, then L will be constant. So we have proved that angular momentum will be constant, which essentially means I1 omega 1 will be equal to I2 omega 2, और अदरवाइज हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m r1 स्क्वायर ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू m r2 स्क्वायर ओमेगा 2. तो अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें सेकेंड वाले, तो इसमें हम देखेंगे कि m विल बी कांस्टेंट, r1 स्क्वायर विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, कि हम जो एक्सिस है, एक्सिस से हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, and omega will be angular frequency of our object. तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. वी कैन एक्चुअली ऑब्जर्व दिस लॉ इन आवर डे टू डे लाइफ, कि जैसे हम बेले डांसर्स की बात करते हैं या फिर हम स्विमिंग पूल में जब हम जंप लेते हैं, सो व्हेन आवर बॉडी इज कंस्ट्रिक्टेड, लेट्स से, या फिर मच सिंपलर एग्जांपल इज व्हेन वी सिट ऑन द रोटेटिंग चेयर. सो अगर हम लेट्स से हम रोटेटिंग चेयर पे बैठे और अगर मेरे हाथ इस तरीके से फोल्डेड है और मुझे कोई रोटेट कर दे, so initially my r will be much smaller because mass distribution मेरा बहुत कम है from my axis of rotation. So in that case omega will be much higher. मेरी जो फ्रीक्वेंसी है रोटेशन की वो बहुत ज्यादा होगी. एंड अगर मैं ड्यूरिंग दैट रोटेशन अगर मैं मेरे हाथ फैला दूं, if I extend my hands just like that, so in that case my r will decrease and proportionally my r will increase and proportionally my omega will decrease. So मेरी angular frequency कम हो जाएगी. So you can also try this at your home, कि अगर आपके पास rotating chair होगी, so you can sit on that rotating chair folding your hands and then say someone to push you, so you will start rotating. So जैसे आप rotate करना start करेंगे, initially your hands will be like this and your frequency will be much higher, and then during that rotation extend your hands, so you will see that as you extend your hands, your frequency omega will decrease drastically, because again it is related to r square and omega. So the decrease in frequency will be much more, and which is again observed in ballet dancers. Like ballet dancers जब dance करते हैं, जब वो rotate करते हैं, so initially when they have to rotate faster, they just keep their hand to their body, and when they have to decrease their angular frequency, they just extend their hand. And similarly this happens to when swimmer is diving in a swimming pool. So initially they fold their body, so their angular frequency is much larger, and then while entering the swimming pool they just extend their body, so their frequency decreases. And this proves that the law which is applicable to the linear momentum, that is also applicable to your angular momentum. So after that we have to see motion of the rolling body. So let's just say rolling motion. So here our problem statement is that कि हमें अगर एक बॉडी एक इंक्लाइन स्लोप के ऊपर के टॉप में अगर है, यहाँ पे अगर हमारी कोई भी बॉडी है वो ऊपर से नीचे आ रही है विदाउट स्लिपिंग, सो बॉडी इज रोलिंग फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम which is inclined at angle theta. So उसके मोशन को हमें डिफाइन करना है. So essentially we have to define its kinetic energy, its velocity and its acceleration. So इन तीन चीजों को हमें डिफाइन करना है. So now in this case the s, here the displacement will be s.
So body from top to bottom जितना body displace करेगी, displacement of the body will be s, and this is h, height of the body. So sin theta will be equal to opposite side upon hypotenuse h, s. So we will have s which is equal to h upon sin theta. Okay, so अब यहाँ पे हम हमारे यूजुअल ट्रिक को नहीं यूज कर पाएंगे कि जब हमने लास्ट लेक्चर्स में जब हम बॉडी के रोटेशन को स्टडी कर रहे थे तब हम बॉडी को हम कंसिडर करते थे कि इट इज मेड अप ऑफ द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर इंडिविजुअली परफॉर्मिंग द रोटेशनल मोशन. वी कैन नॉट डू दैट हियर, क्योंकि यहाँ पे हर पार्टिकल रोटेशनल मोशन के अलोंग साइड एक लीनियर मोशन भी परफॉर्म करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो यहाँ पे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा इजी करने के लिए we will consider two assumptions. The first will be the rolling motion so the first assumption will be rotational motion is performed by whole body, and second is the linear motion is performed by center of mass. So, हम यहाँ पे assume कर रहे हैं कि rotational body, पूरी body, whole body, so complete body will at the same time perform the rotational motion, and the linear motion will be performed only by the center of mass. Now here we will define some terms. M will be mass of our body, V will be velocity, here K will be radius of gyration. So radius of gyration essentially means कि जैसे हमने देखा था कि R हम यूजुअली जब हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर रहे थे, I will be equal to mk square. So जब I को डिफाइन करते हैं mr square, where R is the distance from the center of R is the distance from the axis. So यहाँ पे जब हमारी सिमेट्रिक बॉडी होती है, जब बॉडी में कंप्लीटली मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो वेयर आर इज इक्वल टू के, बट के रेडियस ऑफ gyration essentially means कि वेयर इज द मास फ्रॉम द एक्सिस. सो दैट मींस रेडियस ऑफ gyration कि मास डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितने डिस्टेंस पे. अगर बॉडी सिमेट्रिक हुई देन के विल बी इक्वल टू आर. इफ द बॉडी मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिक, के विल नॉट इक्वल टू आर, एंड आर विल बी द रेडियस ऑफ बॉडी. Now let's just start by kinetic energy. So total kinetic energy will be equal to the rotational kinetic energy, or let's just start with linear kinetic energy plus rotational kinetic energy. So this will be half mv square plus kinetic energy will be half I omega square. So half mv square हम डालेंगे I की जगह पे हम डालेंगे mk square, and omega square, as we all know that omega is equal to v upon r, or otherwise v is equal to r omega. So therefore v square upon r square. So half m v square 1 plus k square upon r square. So this will be your total kinetic energy. So this we have done. Then
we also have to find out what is velocity of the body. For that, अगर जब बॉडी स्लोप के टॉप में है, जब बॉडी इस पोजीशन पे है, तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज जीरो. एंड जब बॉडी ऊपर से नीचे इस पोजीशन पे आ जाएगी, देन होल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. So by the law of conservation of energy, we know that the kinetic energy will be equal to potential energy. And how much is the potential energy at the top? It will be mgh. So mgh will be equal to half mv square 1 plus k square upon r square. And यहाँ पे m will get cancelled. So v square will be equal to twice gh upon 1 plus k square upon r square. So here we can also write v will be equal to under root of 2gh 1 plus k square upon r square. So we have also found out the velocity of the body. Now for the acceleration, we will use the kinematic equation v square plus u square is equal to 2as. Now here initial velocity at the top of the slope, initial velocity of the body u is equal to 0. So initial velocity will be equal to 0. So therefore v square is equal to 2as. हम v square की वैल्यू डालेंगे. v square will is 2gh upon 1 plus k square upon r square and 2as की वैल्यू हम डालेंगे h upon sin theta. So here 2 will get cancelled, h will get cancelled. So therefore a will be equal to g sin theta upon 1 plus k square upon r square. So we have also found out a. So this will be formula for a, this will be formula for v, and also kinetic energy was half m v square 1 plus k square upon r square. So this will be our formula for kinetic energy. So